Hello everyone. Hi. Let me know guys, I'm an audible right for everyone. Let me give a time. I will visible also. Okay, hi, hello. Are you there? Durga students. I'm clearly audible to everyone. Perfect. Okay, those who are watching in YouTube also, for them, good evening, good afternoon. Guys, how was the exam? Canada एक बचा हुआ है. Remaining all done, no. That's why. Okay, let's start our session today. Myself, Sham Sundar. Okay, I'm working as a physics faculty in JNV Haveri. Okay, guys. Actually, before this class, I took few classes for all of you. I taught you oscillations, waves, and I think one concept of thermal conductivity. I think I don't know completely. I thought. Okay, one class I took to all of you, right? Guys, meanwhile, if you have a good means everything is perfect in your hand means please do text me in a chat box to confirm whether I'm an audible to everyone or not for that reason. Okay, that's great. That's great. Okay, we'll wait for 2 to 3 minutes further. Kyunki na still more students set to join here. That's why. In that meantime, we'll talk few good things which are what is the started with this chapter today. Correct now. Hope you all will get a good marks in our 11th standard final examination. Correct now. And then now you are entered to the 12th standard. Meanwhile, in a 2 to 3 days, your CBSE class teachers will be start the 12th standard syllabus to all of you. Correct. And in CBSE 12th May, in CBSE 12th, especially in physics, first and second chapters are there. No, first and second chapters. Okay, these two chapters are very important, or else we can say these two chapters will be very easy if you know gravitation. If you know gravitation means these two chapters will become very easy. Okay, that's why I took this chapter to teach you here. It will take, as per my knowledge, maximum 10 days. 10 days. In this meantime, definitely your teacher will start the CBSE portions also, right? Then match up these things. क्या होता है, क्या हो रहा है उधर and इधर. Okay, then you will get an idea about the concepts. Clear है ना? ये दो चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential and field lines. Okay, these are the very similar chapters. Cool, that's why I told you. Okay, guys, let me know, are you there? Chitradurga, any problem nahi? Yes, finally I got a response. That's great, that's great. Okay, yeah, we'll start our gravitation. Right, what is this gravitation? Gravitation क्या होता है? एक चैप्टर होता है सर 11th स्टैंडर्ड में, राइट? 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन. Cool. Yes, of course. 11th standard का एक beautiful chapter gravitation. Actually, based on this concept only, so many things are evaluated here. Yes, will come, will come, will come. Okay. Okay, it is actually started from evaluated by so many scientists. Okay, we can't able to say Newton only evaluated this gravitation, but before the Newtons,
Newton, so many scientists are taken scripts towards the evolution of gravitation, but final conclusion which is given by Newton Baba. कौन? हमारा Isaac Newton Baba in the year I think 1665, right? In this year he given. And क्या होता है gravitation and everything we will going to study today class. Introduction class है आज का. Okay, ज्यादा नहीं ले लूंगा क्योंकि ना in few classes in few JNV Kannada exam is going on tomorrow in all the JNV of course, but in few places where actually the students are not yet studied the Kannada. That's why they took whole today time to read Kannada. That's why you people already I might you finish the Kannada. That's why you came. Okay, no problem. Gravitation क्या होता है? According to the Newton बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोल रहा इधर. Okay, क्या होता है gravitation? According to him, देखो इधर in the figure, just observe this figure. I took here two masses. First one is M1 and second one is M2. These two are bodies, means masses, massive body we can say in physics. Correct? Huh? The body which have a mass we call massive body. They are actually kept apart by a distance r. When these two bodies are kept at a distance r between these two bodies, okay, on each body the exerts the force. मान लो ये body है ना, ये body exerts some force on body B and B body also exerts some amount of force on A. This is what actually Newton says, that force which is acting by each bodies will be proportional to product of their masses. इधर masses क्या है? Product means M1 है एक mass, another mass क्या है? M2 है. ये दोनों प्रोडक्ट के लिए इक्वल होता है that force which are exerting on each other. Okay, and moreover guys, here I show the direction no like this. In this way the forces will not act. Actually your force will be acting each other along the line joining points. Along the line joining points means from this center say in this side force is acting on a B, we call that one as an force 1, force on 2 by 1. Clear है ना? And then in a similarly mass M2 है ना, body B, this is also acts a force along the line joining of these two body. Okay, this is called force on 1 by second ball. Okay, this is actually force will be acting along the line joining points, not everywhere. ऐसा नहीं होता है. Clear है ना? This is what the one point I want to tell. Second point क्या है? This is the first equation we'll call. Second equation क्या होता है देखो. Again this force is inversely proportional to square of the distance it took. क्या है? ये दोनों को बीच में distance है ना r. Okay, this is inversely proportional to the force. Means this r value will be increases means कितना बार increase होता है उतना बार इस force का value decrease होता है. That is what he is explaining with the equation F is equal to 1 by r square. Clear? ये दोनों equation खत्म ना? Now ये दोनों equation को मिलकर हम एक और एक equation बनाते हैं. देखो इधर दोनों equation represents with the force only. Hence we can say F is proportional to m1 m2 by r square. Right? F is proportional to m1 m2 by r square. I used these two equations guys. Okay, and then here this force is not exactly equal to this quantity. It is actually proportional. It is actually proportional. We need to equate this one means he introduced one constant value that is g. I will tell you what is this g. m1 m2 divided by r square. Correct now? Up to this point I hope there is no doubt to anyone, right? Meanwhile if you have any doubt means please drop your doubt in our chat box itself. Okay, yeah, that's great. That's great. Okay, then guys suno idhar suno. This is the equation for force between a two massive bodies. Okay, objects. There is no problem. इधर g है ना, इसको हम कहते हैं g is called
universal gravitational constant. Universal gravitational constant लिख लो इसको. Sorry, universal gravitational constant. ओके, इसका एक वैल्यू होता है. क्या वैल्यू होता है? इसका वैल्यू होता है इधर g is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, this is the value of g. Here we need to identify one thing, or we need to give a priority for one thing. Here देखो इधर 10 to the power of minus 11 है. इसका फीलिंग आपको देता हूँ. Okay, look at here. This is the value of g. Okay, and how the unit came and everything I will tell you. No worries. If I'm going to मान लो इधर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने. इधर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 kg, 1 kg, एंड और एक मास है इधर, इसका भी मास क्या है 1 kg. These two bodies have an 1 kg each mass. Okay, now they are separated by a distance of 1 meter. मान लो ऐसा है, they are separated by a distance of 1 meter. Then what will be the gravitational force will be exerted in between these two objects? Just look at here, क्या होता है देखो. हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना है इन दोनों को, इन दोनों बॉडी के बीच में कितना है, राइट. yesterday gravitational force ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So for what we can use the formula F is equal to, here only we written g m1 m2 by r square. Right, exactly right guys, you are okay, correct. Now I took here m1 m2 equals to 1 kg and separation distance r is equal to 1 meter. If I keep all these things here means f value will be equal to g होता है, करेक्ट ना. f value किसको इक्वल होता है? g को इक्वल होता है. This is not a small g guys, this is capital G. Okay, small capital G को इक्वल होता है means the force of attraction between these two will be equals to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton होता है. Guys, just imagine ये दोनों बॉडी है. सपोज मान लो मैं एक बॉडी हूँ, राइट. मेरा मास है 60 kg. मेरा दोस्त है इधर, उसका मास है 60 kg. हम दोनों को बीच में थोड़ा गैप है, डिस्टेंस है. And one more thing I forgot to tell you guys, actually Newton told this, the force which is exerted between these two body है ना, it is actually mainly attractive force होता है. कौन सा फोर्स होता है? attractive force होता है. It is an attractive force. Okay, मान लो अब मेरा फ्रेंड मैं अगल बगल में बैठा हूँ, still we are not yet touched to each other, or we are not yet connected each other like a magnet. Do you know why? Because देखो इधर this gravitational force of attraction होता है ना, उसका ऑर्डर कितना है? 10 to the power of minus 11 है. minus 11 means ये 6.67 के बी बगल में लेफ्ट हैंड साइड में तुमको जीरोस डालना पड़ता है. कितना? 11 zeros को डालना पड़ता है, राइट. when you put 11 zeros after, then look at the force, कितना होता है? 0.00000 like 11 after then 6.7 or 67. It's a very minute amount of force. That's why we are not yet attracted to any objects which are in our surroundings. And moreover, this force is there, no, this is a universal force, or this constant will be hold for whole universe. This will be exist between a moon to earth, between a moon and earth. Moon also having mass, earth also having mass. In between these two, what is the force of means gravitational force constant कितना होता है पूछता है ना, उस समय आपको यही बोलना है. You have to tell this force only. 6.67 into 10 to the power of minus 11. This is the force constant which is existing between a earth and as well as moon. This is the same force will be exist between earth and as well as Jupiter. This is the same force will be exist between a sun and as well as earth. Everywhere throughout the universe, this force is
constant. The value will be constant. Everywhere it is applicable. Clear? And देखो इधर फोर्स कितना लगा 0.11 zeros after then 67. It's a minute amount of force, small force which is exist in our nature. That's why we in first chapter you studied like that. There are four forces होता है in our nature. Correct ना? How many forces होता है? Four forces. Correct ना? First one क्या होता है? Nuclear force. Nuclear, that is also strong nuclear force. Second one क्या होता है? Same nuclear है, it's a weak nuclear force. And third one होता है electrostatic force. Correct है ना? Electrostatic force. Fourth force होता है gravitational force. देखो इधर gravitational force. Now tell me guys, nuclear force is a strong one. Correct ना? Nuclear weak force will be exist in an atom only. Electrostatic force means it is due to charges. Charges means एक positive charge होता है, एक negative charge होता है, आपको पता है, right? If another one positive charge if I bring near the positive charge means क्या होता है? ये दोनों charge repel होता है. This is the electrostatic force of repulsion. Correct ना? If I bring negative charge nearby another negative charge means again इन दोनों को बीच में क्या होता है? Repulsion exist होता है, right? But guys, your positive and as well as the negative charges ये दोनों को बीच में क्या होता है? Attractive force exist होता है. Correct ना? Attract हो रहा है means some amount of force will be adding means attracting them to each other. Here also electrostatic force. But gravitational force क्या कर रहा है? मैं खड़ा हूं इधर, मेरा फ्रेंड भी बगल में खड़ा है इधर, right? We are not sticking each together, but there is a force will be exist between them, exist between us, right? But this force will not attract any body strongly just because gravitational force, it is one of the weakest force in our nature. This is the weakest force in our nature, guys. So clear na a point? It's a weakest force. I told you guys in 12th standard you are studying the electrostatics. I already told you guys, right? Electrostatics में charge के ऊपर पढ़ाते हैं आप. Okay, किसके ऊपर? Charge. Okay, in the same way here you are studying about mass. Mass. In mechanics or in gravitation you are studying about the mass, but in the same mass you are studying in a electrostatics as a charge, right? But in electrostatics guys, positive charge होता है and as well as negative charge भी हो सकता है. Charge may be positive and negative, but in terms of mass never be positive or negative. Keep this point in mind. Clear है ना अब तक? Let me know. Up to this point it's clear, right? Is it clear? Yes, that's great. That's great. That's great. Yes, good. Okay, shall we take a problem? Shall we take one small problem? Before that, I want to tell something. Those who are preparing for the NEET and as well as JEE, आपको ये पता होता है हर साल in all the examination there will be a question from the unit and dimension, like what is the dimensional formula for the given equation. Correct ना? What is the SI unit for this equation? होता है like this. NEET में expression, right? For example now, what is the dimensional formula for G? Dimensional formula क्या होता है? उसको लिखना पड़ता है. कैसे लिखना है dimensional formula? Guys, those who don't know, follow this method. It is very easiest one.
very easiest one. And to find out the SI unit also, actually when I'm teaching it to our students only, out of in the class 40 members are there, means obviously 20 members को dimensional formula SI unit लिखने के लिए बहुत परेशान होता है, क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं होता है. Follow these steps, definitely you will get an idea how to derive the SI unit and dimensional formula. क्लियर है ना. इधर G का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है. देखो इधर G किधर आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स किधर आता है, F इज इक्वल टू G m1 r m, ओके m1 m2 बाई r स्क्वायर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमको क्या लिखना है, G को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और SI यूनिट लिखना है. Stay G in a right side only, don't disturb the place of G and take remaining terms to left hand side. ओके क्या होता है, डिनोमीटर में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से f के साथ कौन आता है, r स्क्वायर आता है, डिवाइडेड बाय m1 m2 न्यूमरेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डिनोमीटर का आता है m1 m2 इज इक्वल टू g. मिल गया हमारा g, करेक्ट ना. Okay, now what is the next thing, we need to write the dimensional formula, sorry, means we need to write first SI unit. SI unit क्या होता है, फोर्स है ना, इधर फोर्स का SI unit लिख लो, न्यूटन. R is a separation distance. Separation distance means distance between a two object, that is nothing but length. Length के लिए SI unit क्या होता है, मीटर. Then R को मीटर होता है, R square is there right here, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना. देन डिनोमिनेटर, मास m1 m2 दोनों मास ही है, करेक्ट ना. मास को SI यूनिट होता है kg, m1 के लिए kg, m2 के लिए kg, kg इंटू kg स्क्वायर होता है, लिख दो इधर kg स्क्वायर. देखो दिस इज द SI यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. देखो इधर गाइस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऑलरेडी मैंने लिखा था इधर, इधर देखो देखो इधर, राइट, हियर आई रिटन ऑलरेडी. आई विल शो विद अ कलर, देन यू माइट बी आइडेंटिफाइड, राइट. रेड कलर का एक देखो सर्कल लिखा है ना हम, या न्यूटन मीटर पर केजी, सॉरी केजी स्क्वायर आता है. राइट, where it is came from, actually it came from the same equation only, right. This equation is correct now. Now we got SI unit. SI unit, when you got the SI unit, then only you can able to write the dimension formula, or else you can't write the dimension formula. आपको SI unit पता होना चाहिए, right. After this क्या करना है, dimension formula लिखने के पहले देखना है ये equation को. In this equation, is there any derived quantities are there, means identify the derived quantities. Derived quantities means एक्चुअली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डेवलप होता है. फॉर एग्जांपल देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आपको पता है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर को के, करेक्ट ना. एंड देन करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला. दिस आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. Whenever we are writing the dimensional formula, we need to use the fundamental physical quantities only. If fundamental physical quantities को power rise करना पड़ता है, right. For example, fundamental physical quantities you might be look at here like this, m l t लिखते हैं आप, उसके ऊपर power rise करते हैं. m l t किधर से आ गया, ये सभी की सभी fundamental physical quantities है, उसका पावर राइज करना है. इधर पावर होता है ना, ये पावर को राइज करना है, किधर से राइज करना है, बाय लुकिंग द SI यूनिट. इधर SI यूनिट है ना, इन दिस SI यूनिट यू नीड टू कन्वर्ट ऑल द थिंग्स टू फंडामेंटल एंड देन पावर को राइज करना. देखो कैसे करता है, इधर न्यूटन है, करेक्ट ना. न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हियर फॉर एग्जांपल, ओके. न्यूटन नहीं है इधर, इसके अंदर मीटर है, लेंथ कोई प्रॉब्लम नहीं, केजी है, मास है, दोनों ओके. देन न्यूटन को क्या करना है, हमको फंडामेंटल को कन्वर्ट करना है. न्यूटन कहाँ से मिलता है, F इज इक्वल टू ma, आपको पता है ना, F इज अ न्यूटन. देन m को क्या कहते हैं हम, kg, एक्सेलरेशन को
meter per second square, right? Then instead of Newton, this is the SI unit for Newton. Instead of Newton, we can write kg meter per second square. No, right here in this equation, Newton means kg meter per second square. Where I replace the Newton. Okay, remaining thing here, meter square divided by again kg square is there. देखो इधर 1 kg गायब हो गया. क्लियर है ना? राइट व्हाट आई एम सेइंग. एंड देन मीटर स्क्वायर क्या होता है? मीटर क्यूब होता है. एंड देन kg if it is in denominator, if it is comes to numerator means kg to the power of -1. And then second in denominator, if it is comes to numerator means second to the power of -2 होता है. देखो m stands for not mass guys, it is a length. क्या है? लेंथ है. kg stands for mass, s stands for second. now look at this power कितना है, राइज कर लो इन दिस इक्वेशन. ये टॉप में एक इक्वेशन है ना, इसका पावर राइज कर दो. फर्स्ट इट इज m stands for here mass. मास का पावर कितना है? -1 राइज करो. लेंथ कितना है? 3 है, करेक्ट ना? इधर पावर 3 राइज करो. टाइम कितना है? -2 इधर राइज करो. दिस इज व्हाट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर g. क्लियर है ना? बोलो एक बार, चार्ट बॉक्स में बोल दिए मुझे. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर g. Great. Whenever guys, please be while writing the dimension formula, first you need to know about the SI unit. SI unit is essential. क्लियर ना? आपको SI यूनिट पता होता था मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसान होता है. राइट, गुड. ओके, we'll move to the next slide then. स्लाइड नहीं चेंज हो रहा है. और कुछ बताना है क्या? कुछ नहीं. ओके, एक प्रॉब्लम करते हैं. प्रॉब्लम क्या है? लिखो, प्रॉब्लम लिखो गाइस. देखो इधर, this is one massive body of mass I don't know. Okay, another one body is there. Their radiuses are r. ये दोनों का रेडियस कितना है? r है. Actually can I say these two body are identical? क्या बोल सकते हैं हम? Identical bodies. पहला पॉइंट. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है दे आर मेड बाय सेम मटेरियल. सेम मटेरियल से बना हुआ है. ओके, देन आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द force will be exist between these two objects. What will be the force exist between these two objects? Let me know in a chat box quickly. I will give you exactly 2 minutes of time. Okay, meanwhile I'm expecting the answer from your end. Cool. If you want options means I will give the options also. Okay, ऑप्शन ऐसा है. फर्स्ट ऑप्शन है r². ऑप्शन बी है r to the power of 4. ऑप्शन सी है 1/r to the power of 4. ऑप्शन डी है, थोड़ा उल्टा हो गया, एडजस्ट कर लो. ओके, r to the power of 3. मास के बारे में कुछ भी पता नहीं मुझे. I don't know about the mass. They are not saying about mass. ट्राई कर लो. मास नहीं है. इफ द गिवन मास मीन्स आंसर तो बहुत आसान होता था, एक ही लाइन में आता था आंसर, है ना?
That's great. कर लो कर लो. If mass not given also, you can calculate this one, no problem. Okay, try it, try it. Equation क्या लिखना है force के लिए? F is equal to G M, और एक है मैं ना. ओके लिख दो. M, मान लो दिस इज M1, दिस इज M2. ओके, G M1 M2 by R है, R स्क्वायर है. दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन. करेक्ट. ओके, इधर मास नहीं दिया है, राइट. इफ द गिवन मास मीन्स, मास मान लो m है, लाइक दैट. इफ द गिवन मीन्स डायरेक्टली यू कैन पुट 1 by r स्क्वायर, बट ऑप्शन पे 1 by r स्क्वायर भी नहीं है, राइट. या देखो इधर, इन दिस सिचुएशन क्या करना है ना, आपको डेंसिटी पता है, राइट. डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है. ओके, मान लो m1 के लिए इक्वेशन क्या बनता है इधर? m1 के लिए m1 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 होता है ना. दोनों का रेडियस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिमिलरली मास m2 का डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मास रो v2 होता है, राइट. ओके, देन रो इंटू, इधर आल्सो रो इंटू v1 मींस वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 pi r cube, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. Sphere है identical bodies. Okay, then for this one 4/3, similarly pi r cube. Okay, हमको मास मिल गया m1 and m2. Substitute these two equation in a first. पहला इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लो, जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर लो. आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर. बिफोर आई एम गिविंग, यू शुड गिव आंसर. ओके, F is equal to G into m1 means rho into 4/3 pi r cube, and then here again rho into 4/3 pi r cube divided by into है r square है. आप हमको हमारे के लिए एक्चुअली आंसर नीडेड इन टर्म्स ऑफ r. r में आंसर चाहिए. रिमेनिंग ऑल द थिंग्स को कीप इट एज ए कांस्टेंट. ओके, देन r को कंसंट्रेशन करने से क्या होता है? देखो इन न्यूमरेटर, एक्चुअली गाइस न्यूमरेटर r क्यूब है, r क्यूब है. देन इट विल बिकम r to the power of 6 divided by r square. Correct now? Then the answer will become r to the power of 4. r square इधर cancel होता है. Yes, right, right. Great. कैसा था प्रॉब्लम का? हवा इधर फिल्म थिएटर में KGF हवा, इधर तो प्रॉब्लम का हवा, राइट. अच्छा है. सुन guys, actually why I told no, the same kind of questions will be appear in electrostatics. Electrostatics में सेम क्वेश्चन आता है, बट हाँ सेम क्वेश्चन, बट डेंसिटी भी लेना बहुत इजी होता है ना उस समय, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया है. क्लियर? ओके चलो, दैट्स ग्रेट थिंग, and we'll move to the next slide. Hope you all understood. If you meanwhile, if you are not understood means please let me know. Some properties we need to know. What are the properties of gravitational force? First property होता है, it is always attractive in nature, while electric and magnetic forces can be attractive or repulsive. Already I told you guys, this force, gravitational force, it is always be attractive force, always. Okay, whatever it may be, point. Okay, it is always be attractive force. But when you're coming to the magnetic force, आपको पता है ना, 10th standard में पढ़ा है आप, राइट. नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है? रिपल होता है. साउथ साउथ क्या होता है? रिपल होता है. बट when you bring the north pole near the south pole means they will get attracted. Correct now? Similarly charges also, charges. Guys, one more point I forgot to tell. Here we are talking about mass.
करेक्ट ना? मास में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है बट चार्ज, व्हेन यू कम अक्रॉस द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है. व्हेन यू कम अक्रॉस द मैग्नेटिक फोर्स मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट में पोल्स होता है. क्या होता है? पोल होता है. पोल वो एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ. सम एनालॉजीज स्टेप बाय स्टेप लाइक दिस इट विल बी कैरी. क्लियर है ना? फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. सेकेंड पॉइंट क्या है? It is independent of the medium between a particles, while electric and magnetic forces are dependent on the medium. Yeah, I will tell you what is this. Actually, we studied here masses. These are the two masses. These are not my eyes. Okay, m1 and m2. They are separated by a distance of r. कितना distance है separation? r distance में है. Okay, इन दोनों को बीच में फोर्स, इफ दे आर आइडेंटिकल मास मींस ये दोनों को बीच में फोर्स होता है इज इक्वल टू जी. मींस जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 into 10 to the power of minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ जी. करेक्ट ना? मान लो दिस सिस्टम, दे दो मास का सिस्टम एंड सेपरेशन डिस्टेंस सिस्टम है ना, इट इज आई केप्ट इन अ ईयर में है. ईयर में कब था? उस समय जी का वैल्यू इतना था. ओके, नाउ इफ आई एम गोइंग टू कीप दिस वन इनसाइड एनी वाटर के अंदर रखूंगा मैंने वाटर. ओके, if I keep this one inside the water also, this value will not change. The same value will be appear whether you are inside the deep sea, whether you are in a sky, whether you are in a space. It doesn't matter. The value of g or force between a two objects, unit object will be similar. And moreover guys, actually this force of attraction actually mainly gravitational force को हम बोलता है point object के लिए valid होता है. What we are saying? Point object के लिए. So now actually Newton explained this one for the earth and as well as sun. Main actually I also told earth and as well as the moon, between these two force will be hota na, it will be same. Then is the earth and moon will be point objects? Is these two are point objects, earth and as well as moon? Actually these are the very big objects, no, right? Then is the Newton's laws of gravitation is valid there? Think कर लो एक बार. Yes, it is valid, because no, actually masses are very big, but the separation distance also very big comparatively universe. When you compare these objects, sun mass and as well as the earth mass, and when you view from the galaxy somewhere some other point itself, okay, these two objects looking like a tiniest objects, very small objects होता है, point objects होता है, इसलिए this gravitational force will be valid होता है. Clear? Okay, some other point I told you, but guys, okay, either it is independent of the medium is water रहे और air और kerosene petrol किसके अंदर डालते हैं डालो. Okay, this value will not change, it will be same everywhere. Okay, and then coming to the third point. क्या है? It holds good over a wide range of distances. It is found true interplanetary or interatomic distances also. Yeah guys, it's a wide range distance के लिए holds good होता है. It will be holds good for a wide range distance. I told you guys, from the sun, earth to moon, there's a distance between the earth to moon is very large. Correct na? Even their masses will be big. Due to their distance, these two behave like a point objects. That's why it is holds good. Interplanetary, first one is planetary के लिए होता है. Next one interatomic distances. Atomic distance आपको पढ़े थे ना केमिस्ट्री में, right? Atom से atom, दो atom होता है ना, उसके बीच में होता है ना space, not space, distance. Okay, interatomic distance. Up to that point also this gravity force is valid. Guys, this is very important. Guys, note on this one.
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। यस, एक्चुअली फोर्स ऑफ रिपल्शन दे लेते हैं हम उधर, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्चुअली उधर क्या करते हैं ना, वी विल यूज दिस फार्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by d square. Here 1/4 pi epsilon naught ideyala, we call this one as an k Q1 Q2 by d square or r square. Here this is for the electrostatic force. Here k will be k है ना, this is a constant. K is a constant for the electrostatic medium, but in this chapter we are studying the g. It's a constant for the gravitational field constant. इधर देख Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 we call charges, either it may be positive charge, negative charge, but in this gravitational force we are replacing this one with the m1 m2, means masses के लिए replace कर रहा है, separation distance d ले लो और r ले लो कोई बात नहीं, same, there those are same, clear है ना, lot of similarities are there, lot of similarities are there. I hope you are understanding these points. Clear ना? Based on this question, definitely I will tell you guys this interatomic distance है ना, इसके ऊपर question बनता ही बनता है. Keep it. Okay, next fourth point है, it is actually central force acts along the line joining centers of two interacting bodies. Central force means already I told, this is a body 1, this is a body 2, whose mass is m1 and m2. Okay, इन दोनों को बीच में force होता है ना, this force of attraction will be line joining these 2 points like this. center to center होता है, ये बॉडी के सेंटर से ये बॉडी के सेंटर के तरफ ऐसे. Okay, not like this, not like this. Clear? Okay, and second, fifth one, it is two body interaction. Gravitational force between the two particles is independent of the presence or absence of the other particle. Means guys देखो, इधर एक बॉडी है उसका मास m1 है, इधर और एक बॉडी है मास m2 है. ओके, इन दोनों को बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट कितना आया था हमको, g वैल्यू. गाइस आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन just because this constant value you have to be remember while solving the problem. Sometimes they won't give a number, you have to practice this one. 6.67 into 10 to the power of -11 Newton meter square per kg square. Okay, ये दोनों का बीच में था. Now what I will do, I am going to introduce one more object here in between these two. उसका mass है capital. Now let me know guys, if I'm going to introduce this another mass, if I'm going to introduce this another mass, is this value will be changed or remain same? I want answer from your end, from your end. Is the value will be same or different होता है? Good, good, good. Yeah, it will remain same. Okay, these are all the properties of gravitational forces. Hope you all understood, right? ज़्यादा नहीं बोला मैंने. Which are the things which are essential for your classes? The same thing I'm explaining. Clear है ना? If you're getting bored means let me know, I will tell you story. Okay? Story बोलता हूँ मैंने. Okay. Okay, that's great. Next क्या है ना, और एक कॉन्सेप्ट बोलता हूँ मैंने. Actually, this is a force, right? Force है means force को डायरेक्शन होता है. फोर्स को डायरेक्शन होता है. कैसे होता है देखो इधर. दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2. ओके, इन दोनों को बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स. ओके, मान लो दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट. इधर फोर्स लिखने का एक तरीका होता है गाइस, उसको आप पता करना है. मान लो ऑब्जेक्ट m1 exerts the force on m2 means we will write like this, F21. F21 का मतलब है फोर्स
acting on 2 by the object m1. इधर लिख लो इसको, F12 means force acting on 2 second object by first one. Clear है ना? Okay, M1 ने force लगा yeah, M1 acts force on M2. Now M2 will be silent. Is it will be in silent? No. I will also apply some amount of force on you. Like that it will be think and it will be execute the force. This force will be F21. F21 क्या होता है? Force. F21 means force acting on 1 by 2. दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, सेकेंड ऑब्जेक्ट, it is acting the force on first object, that is represented by F21. And moreover guys, these two forces are there, no, F12 and as well as F21. इधर सुन, F12 and then F21 है ना, ये दोनों फोर्स एक्चुअली इक्वल होता है. क्या होता है? इक्वल होता है. बट F12 का फोर्स इन दिस डायरेक्शन है, F21 का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई वी विल कीप हियर नेगेटिव साइन. वी विल कीप हियर वन नेगेटिव साइन. क्लियर है ना? These two forces are equal in magnitude when unit masses are exist. When unit masses are exist and opposite direction. इस सुना है क्या? इसको क्या बोलता है? इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन. किधर से आता है ये इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन? सुना है क्या इसको कभी भी इन दिस एरा में? और एल्स व्हाट वी कैन से, यही जन्म ने सुना है क्या इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऐसा बात? न्यूटन्स थर्ड लॉ. yes, Newton's third law में. Guys, this is all the things which we are studying. No, these are all belongings to our planet only. अर्थ का है ना? कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ, है ना? ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ से आता है, राइट ना? Meanwhile, this gravitational force will be exist the means except the Newton's third law also. Keep this point also. Okay, this is enough. And then क्या बोलना है next? I think it is enough for today. We'll study, yeah, few good questions are there. Give the answer for these questions. First question is that gravitational force between two objects does not depend on. Bolo, what is the answer for this question? Yes, good. Yeah, actually this force will be exist product of the masses also, correct now? And then gravitational constant also it is depend, and distance between a masses, it's there 1 by r square will take, but we are not taking the sum of the masses. That's why this is the correct answer. Means doesn't depend. Question bol raha hai does not depend, isliye. Right, great. And yeah, here one more question is there. You will get some idea about it now. Question is that a mass m, एक mass है हमारा पास m, okay, is divided into two parts divide कर दिया हमने. उसका मास क्या होता है? xm होता है वो एक पार्ट. अनदर पार्ट होता है 1 minus xm. Okay, for a given separation, the value of x for which gravitational attraction between the two pieces becomes maximum. Sunidhar, beautiful question this is. Actually, सुनो, this is a mass m है. Okay, क्या हो रहा है इधर? ये मास m को मैंने ब्रेक कर दिया. क्या कर दिया मैंने? ब्रेक कर दिया.
एक पार्ट का मास होता है xm, अनदर पार्ट का मास होता है 1 माइनस x इंटू m, राइट? Yeah, in now when we are breaking, no, these two will becomes like this. दो हो गया, ये दोनों को बीच में अब ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होता है ना, क्या? What value for of x on what value of x this gravitational force will be maximum? पूछ रहा, कैसे कैलकुलेट करना है, करो. I will tell you one thing. I will give a clue for you all to calculate this one. क्लू क्या है ना, आपको पता है, आई थिंक यू स्टडीड द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आता है ना, नहीं, वर्क पावर एनर्जी में आता है ना. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में एक्चुअली व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी इन stable position, in a peak position, at that point potential energy will be become maximum, means du by dx when it becomes potential energy will be maximum, we will say, right? आपको पूछता रहता है किधर एग्जाम हुआ ना, FST एग्जाम्स लाइक दैट, इन दैट एग्जाम दे आस्क लाइक दिस क्वेश्चन. मान लो एक पोजीशन है, इधर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हूँ, एट दिस पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम होता है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है. इफ आई टच दिस बॉल इन दिस डायरेक्शन मींस इट विल कम डाउन. व्हेन इट इज कम डाउन, नो, कम डाउन, इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है because of the height. If I push this one in this direction means it will come this direction, again potential energy will be decrease होता है. Potential energy when it is maximum, du by dx means this position should be maximum, value will be equal to 0 होना चाहिए. In a similar way guys, here force will be maximum होता है when means df by dx value should be equal to 0 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लिख लो इधर, df by dx value should be equal to 0. When it happens, no, that time only maximum force will be exist between our two objects. सब कुछ पता है आपको. f का वैल्यू क्या होता है? f is equal to g m1 m2 by r square. r square ना. Now what is the r square here? What is r square? सेपरेशन डिस्टेंस क्या होता है इधर? कोई प्रॉब्लम नहीं, r ही ले लो. r is the separation distance. Okay, after getting two pieces, r is the separation distance. Okay, now now हमको क्या करना है? m1 और m2 वैल्यू पुट करना है. m1 का वैल्यू क्या हो गया? देखो इधर xm हो गया. m2 का वैल्यू कितना हो गया? 1 माइनस xm हो गया. सब्स्टिट्यूट हियर. I'm also solving this question. Meanwhile, I'm expecting the answer from you guys. Before I solve this question, you should drop your answer. Okay, what is the value of x? Okay, now come to the point. F is equal to क्या होता है? देखो g. m1 का वैल्यू कितना है? x into m. लिख दो x into m into m2 का वैल्यू कितना है? 1 minus x into m. अरे 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 सर, ऑप्शन देना है क्या? ओके, देता हूँ ऑप्शन, ले लो. ऑप्शन है 3 2 4 6. These are the options. These are the options. Okay, come to the next point. Divided by r square है, करेक्ट ना? नेक्स्ट क्या करना है? इधर देखो g, ओके, g m r square, दिस आर द कांस्टेंट थिंग्स. ओके, वन साइड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. g m है m स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इधर x इंटू 1 माइनस x बचा हुआ, करेक्ट ना? दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. वी गॉट फोर्थ इक्वेशन. हमको x का वैल्यू पता करना है. Hence we need to substitute this fourth equation in this equation, df by dx, correct ना?
सब्स्टिट्यूट करना है। इधर करता हूं मैंने, देखो एक्चुअली इक्वेशन था df बाई dx विल बी इक्वल टू 0। हमको f का वैल्यू पता हुआ था g m स्क्वायर x इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। इधर देखो जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, इट इज एनफ। ओके, दिस द वैल्यू ऑफ एफ, सब्स्टिट्यूट हियर, सब्स्टिट्यूट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या है इक्वेशन, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना। इधर एक्चुअली व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, इधर देखो डिनोमिनेटर में क्या है, फंक्शन x है, meanwhile the function which you want to derive here it should be in x, correct ना, remaining thing will become constant. When constant function only there means constant of differentiation will become 0, constant of differentiation will become 0 when the constant will be with the any function of differentiation means constant को बाहर रखना पड़ता है, राइट ना। हियर gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर रख लो जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना है आपको x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। हो गया क्या आंसर, जल्दी बता दो ना। ओके देखो इधर जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना, इसको राइट हैंड साइड लेने से क्या होता है, दिस वैल्यू विल बिकम 0, राइट, दिस वैल्यू literally will become 0, then remaining thing will be here d of x minus x square by dx बचा हुआ है, it is equal to 0। ओके, डिफरेंशिएशन करना है दोनों को, फर्स्ट क्या है dx by x, फर्स्ट वन माइनस ऑफ देन dx स्क्वायर by dx is equal to 0। इतना बेसिक्स में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैंने, जिसको नहीं आता है उसको भी आना चाहिए। मैथ्स टीचर बन गए आप। ओके देन dx by x क्या होता है इक्वेशन, इधर देख 1 माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना है, एक्स टू द पावर ऑफ n, फॉर्मूला लगाने से क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 मीन्स 1, it is nothing but 2x will be equal to 0, take 2x to right hand side then it will become 1 is equal to 2x, x का वैल्यू चाहिए ना, take 2 to left hand side then it will become 1 by 2 is equal to x, finally we got an answer of x, x का वैल्यू 1 by 2 होता है ना, सॉरी गाइस सॉरी, x का वैल्यू 1 by 2 होना चाहिए, it is my mistake, I given an option of 1 2 3 4, right, this is not 1 2 3 4, 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 6, sorry I think you got an answer but yeah it's by mistake, I apologize that one। x का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 by 2, when x value will be 1 by 2, that position, in that position the force between these two objects, when we break this object to two parts, no, one will be xm, another one will be 1 minus into xm, okay, इसका attraction बहुत ज्यादा होता है, it will be yes I got it, I realized that one actually, while solving, no, I didn't get a proper way, that's why I given 1 2 3 4 like that। Okay, no worries, आंसर तो आ गया ना, खुश है I think। How was the class, how you feel, how you felt? Yeah, thank you, it's so nice to teach here, you people are responding also continuously, I'm very happy with you all। Okay, from tomorrow onwards also we'll continue the same topic and we'll connect tomorrow, until then take care, bye bye। What?